Hi, welcome to Back to Basics. What is the first thing that comes to your mind when you talk about birthday? To my mind comes a cake first. And I'm pretty sure कि आपको भी सबसे पहले केक की ही याद आती होगी. Now you must be thinking, what is the relevance of cake in the chapter of phrase? Yes, this is. Please come and see. Oh, see, this is the photo of a cake. And this entire thing is a cake. Though the baked portion is called a cake and the upper decoration or icing is known as topping, right? Similar is the case of a phrase in a sentence. If we talk about the base, we can compare it with a sentence, right? This is a sentence and the top portion can be called phrase. So, by taking or by giving this analogy, what I mean to say is phrase एक सेंटेंस में वही काम करता है जो कि एक केक में टॉपिंग करता है, उसमें एक्स्ट्रा फ्लेवर देने का और उसकी खूबसूरती बढ़ाने का. सिमिलरली जो फ्रेज होता है वो एक सेंटेंस को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, एक सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने का काम करता है. सो अगर हम सेंटेंस में किसी फ्रेज को वर्कआउट करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे? डियर फ्रेंड्स, 7th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स आपको पूछा जाता है एग्जाम्स में कि इस सेंटेंस में यू हैव टू वर्क आउट फ्रेज, राइट? एंड समटाइम्स आपसे टाइप्स ऑफ फ्रेजेस भी पूछे जाते हैं, लेकिन आज के चैप्टर में हम सिर्फ फ्रेज को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे. उसके नेक्स्ट चैप्टर में वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड आउट नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज एंड सो ऑन. तो आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि किसी सेंटेंस में हम फ्रेज को कैसे निकालेंगे. Dear students, I have written 2 steps wherein the first step says that if you have to find out a phrase in a sentence, then you have to first figure out the subject and verb in that sentence. Please do mind that there can be no sentence without a finite verb. Now you must be wondering, what is a finite verb? Or maybe some of you might have heard this term finite verb. Kindly recall, a finite verb is a verb which is limited by tense, number and person. Tense is present, past, future. Number, singular and plural. Persons of pronoun, first person pronoun, second person pronoun and third person pronoun. So what do I mean to say? When we use a verb understanding the tense, number and person in a sentence, then we are using a finite verb, right? So सबसे पहले हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब को पढ़ना है. हम आगे आने वाले चैप्टर्स में फाइनाइट वर्ब को बहुत डिटेल में भी समझेंगे. सेकेंड स्टेप में जब हम सब्जेक्ट को और फाइनाइट वर्ब को फिगर आउट कर लेंगे तो हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी समझ में आ जाएगी और वही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमारी क्या हो जाएगी? फ्रेज हो जाएगी. तो आइए इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करते हैं इस सेंटेंस के ऊपर. सेंटेंस है माय बर्थडे केक हैज ब्यूटीफुल टॉपिंग. सबसे पहले सब्जेक्ट, इफ यू रिमेंबर हमने अपनी सब्जेक्ट प्रेडिकेट वाली क्लास में समझा था कि सब्जेक्ट इज समथिंग वी आर टॉकिंग अबाउट. Yes, so what we are talking about? We are talking about my birthday cake. So this will become the subject. Now you see, my birthday cake is the subject. What is the verb? Verb is has. अभी हमने समझा था वर्ब नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग जो वर्ब्स यूज की जाती हैं उन सभी वर्ब्स को फाइनाइट वर्ब कहते हैं. यहाँ पर आपने टेंस यानी प्रेजेंट टेंस के हिसाब से वर्ब को यूज किया है और केक जो है वो सिंगुलर है इसलिए भी आपने हैज को यूज किया है, अदरवाइज आप हैव यूज करते. तो ये जो हैज हो गई वो हो गई फाइनाइट वर्ब या वर्ब. नाउ इफ आई से माय बर्थडे केक हैज, तो आई हैव टू सप्लीमेंट इट विद सम इंफॉर्मेशन जो कि इसे कंप्लीट करे. तो माय बर्थडे केक हैज टॉपिंग. ब्यूटीफुल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, राइट? सिमिलरली अगर मैं ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स को लूं या सब्जेक्ट को लूं माय बर्थडे केक, तो इसमें भी इज देयर एनी इंफॉर्मेशन विच इज एक्स्ट्रा? यस, माय बर्थडे इज एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. व्हाई? बिकॉज इफ आई से केक हैज टॉपिंग,
It makes complete sense. Now you must have understood कि हमें किस तरीके से सब्जेक्ट और वर्ब को अलग करना है, और सब्जेक्ट में भी अगर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है तो उसको भी हमें अलग कर लेना है, राइट? सो हियर माय बर्थडे इज अ फ्रेज एंड ब्यूटिफुल इज अ फ्रेज. इस सेंटेंस में हमें दो फ्रेज मिल गई. एक सेंटेंस में एक या एक से ज्यादा फ्रेजेस हो सकती हैं. Another important thing, there can be no sentence without a finite verb, right? And somewhere you may find that it is written that एक फ्रेज में फाइनाइट वर्ब नहीं होती है, बट इट इज रॉन्ग. एक फ्रेज में अगर वो वर्ब फ्रेज है तो उसमें फाइनाइट वर्ब होगी ही होगी. श्योर. नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं. प्लीज डू रिमेंबर कि वर्ब में या वर्ब फ्रेज में फाइनाइट वर्ब होती है. I have taken certain examples or practical examples from textbooks, and now we will apply these two steps to these examples to understand better how to find out a phrase in these sentences. Dear friends, the first sentence is I want an animal print coat for the play. Let's first figure out what is the subject and what's the verb. Our subject is I, because I is the one who is being talked about. So I is the subject, and want an animal print coat. So want will be the verb. So what I have figured out, subject and verb, I have figured out I is the subject and what is the verb. Now I need answer to want or a complement. What do I want? I want coat. Don't you think that these three words make a complete sense? I want a coat, right? If I say I want a coat, then this is a complete sentence, and all the other things, an animal print here and for the play, they remain extra information, and so these are phrases. So again, in the next sentence, we have to do the same. We have to find out the subject and the verb, and what are the things or what are the words which are giving us a complete sentence. Okay, the minimum of those words we have to find out in a sentence. So he is a man of wisdom. He is the subject. Is the verb. Now what else do I need to complete this sentence? I need he is a man. So the sentence will be completed here in sense he is a man. So of wisdom is extra information, is the phrase. So now you must have understood. Let's do it again. The old lady recovered very slowly. What is the information or minimum information which is required to frame a sentence, right? Here I need lady recovered. Only lady recovered is sufficient. The lady recovered is sufficient to make a sentence. So what is additional information? Additional information is about the lady, that she is an old lady, and very slowly. These two are phrases, right? Similarly, he speaks like a born orator. He is the subject. Speaks is the verb or the finite verb. He speaks, वो बोलता है. Complete sense. So it's a sentence. What is an extra information? Like a born orator. So this will be phrase. Correct? Do not talk like that. What is the subject in this sentence? अगर आपको types of sentences नहीं आते हैं तो मेरी वीडियो पे जाकर आप types of sentences समझ लीजिए, और आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसमें you implied है. So इसका सब्जेक्ट you है और do not talk इसकी वर्ब है. तो इसके बाद जो बच जाएगा वो हमारा फ्रेज हो जाएगा. Like that बच जाता है और यही हमारा फ्रेज है. I have forgotten how to play this game. Subject I. Verb have forgotten. What is the verb? Have forgotten. So what remains? What is the extra information? I have forgotten. ये आपका sentence हो गया क्योंकि it is giving you sense. Extra information is how to play this game. This is a phrase. Another sentence.
I have been painting the walls of my house with whirly art. What is the subject? I hope by now you people must be able to work out the subject, the verb, as well as the phrase. Here, I is the subject. Have been painting is the verb. And the walls of my house with whirly art is an extra information. So this is a phrase, right? So this is how you have to find out extra information from the sentence, and this extra information will be your phrase. For such interesting and videos wherein you will be learning practical applicability of grammar rules, please do share, subscribe and like my channel. Thank you. Bye bye. Have a nice day.